Hello everyone. In this video we are going to discuss about the Dmart. This is the second video on the Dmart, and of course the fundamental analysis of Avenue Supermarkets, that is Dmart. And in the previous video हम लोगों ने ये discuss किया कि what is the basic nature of the business, including the financials till June 2021. ये वीडियो में फाइनेंशियल्स नहीं रहेगा, विल नॉट बी एनी फाइनेंशियल डेटा एज सच. मोस्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड द वे दे अप्रोच दिस retail business. Surprisingly, as we know that this Avenue Supermarket Dmart chain is one of the chains, I mean one of the only supermarket chain in India of this scale which is profitable and registering profits year after year, and of course market capitalization is like अभी स्टॉक का भाव कुछ 3,900 के आसपास है. फंडामेंटल एनालिसिस जो पहला पार्ट किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. That time the stock was trading around 3,300 and today it is 3,900 in a span of maybe more than a month, maybe month or 45-50 days. तो है खास है कंपनी के बारे में. lot of things are special. As I said, we will not discuss anything about the financial data as such in this video. So शुरू करते. Basically, as we know, the Dmart expanded from Mumbai. It started the first store in Mumbai, and from this point slowly it expanded in Maharashtra first of all, and then nearby state Gujarat, Telangana, Karnataka. इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है. These are some of the pictures which shows the growth and expansion of the Dmart over the years. So आज ये इनका प्रेजेंस ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी कम है, बट वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया है पिछले कुछ सालों में. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे अप्रोच देयर बिजनेस इन अ फर्स्ट सेंस. यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी फॉर्चुनेटली उनका रिलीज हुआ है अभी इसी महीने में, तो वो भी अपने पास है. सो दिस वीडियो विल आल्सो डिस्कस सम एनुअल रिपोर्ट. 2021 का एनुअल रिपोर्ट है अपने पास, तो उसमें से भी कुछ डेटा ऑब्जर्वेशंस आई विल ट्राई टू फेच एंड पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. So this is my very first observation, as you can see in this picture, annual report. This picture is been taken from the annual report. At Dmart, we follow a cluster-based expansion approach. We thus focus on deepening our penetration in areas where we are already present before expanding to newer regions. Using this strategy, we added 22 stores in 2021, thus ending the year with 234 stores spread across 11 states and 1 union territory. Okay. Now what is this cluster based approach? It's simply that इतना तो हमको पता है, हमको across India the consumer behavior is not uniform, and when it comes to grocery products, apparels और and so on, हर एक रीजन का टेस्ट अपना अलग है. इतना ही नहीं बल्कि हर रीजन में कुछ ब्रांड्स का कमांड है, इंक्लूडिंग द मेजर FMCG brands. They although they are pan India, but they have certain geographies as their stronghold areas, and in some geographies they are weak. It's very clear. इतना डेटा तो नहीं है कि मैं ये मेरे ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर सकूं, but I am making a generalized statement that definitely this regional behavior is there in terms of taste, color and fashion and so on. So cluster based means, and it changes very frequently. एक आप 100 भी नहीं,
50, 70, 80 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए, कोई भी इंडिया में कहीं भी 70, 80 किलोमीटर का आप रेडियस ले लीजिए. In that radius, the behavior will be different. Out of that area, particular zone, the behavior will be different, consumer behavior. And you will find that there is a change in taste, brands and so on. So ये एक बहुत ही highly differentiated market है India, as well known fact. Everyone knows this. तो इतने differentiated, fragmented, stratified market में grow karna is a challenge, and that's why till now in India there is no supermarket chain which succeeded like Dmart. Of course Reliance Retail is उनका रेवेन्यू इससे ज्यादा है और उसका मार्जिन भले कम हो, बट दे हैव रेवेन्यू हायर देन डीमार्ट. बट स्टिल व्हेन वी से ओपन सुपरमार्केट, डीमार्ट स्टैंड्स आउट. तो cluster means first of all they will open a particular store in a area, any particular area, and from that one store they will start tracking the behavior, and they will try to adjust to that regions or that area choices, and then accordingly they will have the vendors and the related local connections, and then the expansion in the that particular region. ये देखिए फिर से मैं पिक्चर वो जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने जैसा है कि we believe, I mean they believe in deepening the penetration in the areas where they are already present, instead of just expanding like anything. No, they are very focused and very step by step approach, and it paid off over the years. It paid off and it is paying off very well. Maharashtra mein still there is a very high scope in Maharashtra state itself to expand, and they are expanding. Definitely they are expanding, और बहुत स्कोप है ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल का, बहुत ही हाई. मतलब और भी, if I may not be an exaggeration if I say there is a 10 times growth opportunity for this particular company in terms of revenue. In terms of revenue, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट या प्रॉफिट में, ये in terms of revenue there is 10 times scope. इतना बड़ा मार्केट है इंडिया. And the point is that they have captured it successfully. Lower middle class को target किया हुआ है, and daily discount is their theme, and they are living that particular theme since past 20 years. So ये एक समझना बहुत जरूरी है. when we जब भी आप डीमार्ट का स्टॉक देखोगे, आप पहला नजर आपका पी रेशियो के ऊपर ही जाएगा, which is like 222, 201. पहले कुछ 1-1.5 साल पहले 115, 120 था, तभी भी एक्सपेंसिव लगता था. आज 200 के ऊपर है, आज तो एक्सपेंसिव लगेगा ही. There are multiple factors. That's why I am making videos one after the other. एक ही वीडियो में कवर करना डिफिकल्ट है. So this cluster based approach है. तो नॉर्थ में वो लोग क्लस्टर से ही जाएंगे. एनसीआर में भी एक डीमार्ट है गाजियाबाद में, तो वहां का वो बिहेवियर ट्रैक कर रहे, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल एक्सपैंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एनसीआर और द नियर बाय रीजन. पंजाब में प्रेजेंस दिखाना शुरू किया, राजस्थान में कॉन्सेंट्रेशन आज भी गुजरात, महाराष्ट्र में इनका मेजर, महाराष्ट्र में गुजरात, तेलंगाना, एंड दिस रीजन they are expanding, and there is ample of scope to expand in this states itself. ये 2-3-4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, इसमें काफी स्कोप है फिलहाल भी, एंड that's how they are expanding. और एक बात, now this being a cluster based approach, आपने कभी गौर किया डीमार्ट के स्टोर्स के ऊपर, तो they have made it very simple, low cost, and focused on only one thing, discount and value to the customer, instead of कुछ इंटीरियर हो या कुछ एक्सपेंसिव फर्निशिंग्स हो, वैसा कुछ नहीं है. बहुत ही सिंपल आउटलुक रहता है स्टोर का, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ओपन द स्टोर्स इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. उनका तो लॉन्ग टर्म लीज और वो सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. उनका मॉडल अपना अलग है, ओनरशिप मॉडल, and that's how they function.
cluster based, ownership based, low cost. Cost मतलब they don't spend too much money on that particular just building that store और interior और वो जो furnishing है उसके ऊपर नहीं. It's very simple, clear, but there is a value for that customer. So ये भी एक noticeable point है. अगर आप कोई, मैं किसी और स्टोर का जिक्र नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, but if you look at other supermarkets, they do spend good amount of money on that interior and the internal furnishings. So that is not the case with Dmart. So ये भी कहीं ना कहीं margins में add हो रहा है. आगे बढ़ते, one more picture in front of you. It's not purely financial, but yes, it's related to finance. As you can see, the revenue per retail business area square feet. So basically, in simple terms, revenue per square feet. As you can see, जो बढ़ आपके सामने है और 2021 में कम हुआ है एंड सिग्निफिकेंट ड्रॉप में भी हम लोग अपने 15% का समझ लेते, रफली 15, you can say 20% also, no problem. Of course, because of the pandemic, and pandemic ने कंपनी को जिस तरह से हिट करना चाहिए था उस तरह से अफेक्ट नहीं किया है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट द पी रेशियो इज नाउ लिटिल हायर, लिटिल नहीं, वो सिग्निफिकेंटली हायर, 222 प्राइस टू अर्निंग रेशियो. बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वन ऑफ बीइंग दिस पैंडेमिक हिट होने के बाद भी दे आर surviving and they are profitable. DMart Avenue Supermarket is profitable entity in this pandemic financial year also. हाँ, कम हुआ है, रेवेन्यू का कम हुआ है, मार्जिन भी थोड़ा सेटबैक बैठा है, बट it's profitable. So ये एक पैरामीटर है, ड्रॉप हुआ है, अगेन इट विल रिबाउंस, एंड दैट्स व्हाई द पी रेशियो इज फैक्टरिंग सम ऑफ द फ्यूचरिस्टिक नंबर्स. और एक वही रिलेटेड पिक्चर आपके सामने, as you can see, retail business area expansion. Even in the pandemic year, they could expand like more than 10%. You're able to expand approximately 10%. Okay. Of course, इससे ज़्यादा expansion possible था, but due to this, they could not. Pandemic, they could not. But it's million square feet में है data, million square feet. सक्सेसफुल, एंड यही खासियत है, ये जिस तरह से दे आर एक्सपेंडिंग. 234 स्टोर्स इज नॉट अ बिग नंबर. लुकिंग एट द वैल्यूएशन, 234 स्टोर्स इज नॉट अ बिग नंबर, बट द पोटेंशियल इज द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड दे कैन इंक्रीज. ये जो कंपनी है उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही इजीली इंक्रीज करता है जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वो स्कोप है उनके पास, बट डिलिबरेटली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है एंड दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर कंसिस्टेंटली. दिस वन मोर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, ये थोड़ा एनुअल रिपोर्ट से है. इंडस्ट्री ओवरव्यू. Here is the industry overview in front of you, directly from the annual report. The pandemic has significantly impacted several retail businesses in the country. The industry has seen several store closures due to lower footfalls and lean demand. Growth for the next few years will continue to be dependent on the progress of the pandemic in the country and the speed with which the population of the country is vaccinated. The overall retail industry is estimated to have de-grown by 10 to 13% in 2021, FY 2021, and within this, the organized brick and mortar industry is estimated to have de-grown by 19 to 22%. तो ये obviously जो unorganized retail है उसको तो कम setback बैठा है, जो organized retail है उनको काफी रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. RT-PCR टेस्ट हो, डबल वैक्सीनेशन हो या जो भी है, they have to follow all those things, and this company did follow that during the pandemic months, and that's why we could notice some fall in the revenue
on the revenue side. CRISIL is the source of this information. Again, one more picture. This talks about the e-commerce industry. मतलब ये कंपनी का e-commerce में भी presence है. For that, यहाँ पे ये वीडियो में एक passing reference लूंगा मैं, but on that I will make a exclusive video कि e-commerce, Dmart and e-commerce का, how the opportunity can be captured by this company in this e-commerce space. This picture in front of you, e-commerce has seen significant acceleration during FY 2021. Consumers prefer to stay home and increase their adoption of shopping from e-commerce platforms. During the pandemic, the industry is estimated to have grown by 9 to 12% during FY 2021. Some of these habits likely to sustain in long run and benefit the e-commerce industry. Within e-retail, food and grocery segment has seen significantly strong growth in FY 2021. Again from the CRISIL report. So, कहने का मतलब ये है कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में ई-कॉमर्स का जिक्र किया गया है एंड it's not surprising that they are part of this e-commerce industry, although in a different manner. और एक पिक्चर आपके सामने, ये बिजनेस ओवरव्यू है कंपनी का. I will just take overview. महाराष्ट्र में 74 stores है, गुजरात में 42, तेलंगाना 27. You see the number of stores actually is as comparison to that state is nothing. ये जो महाराष्ट्र में 74 है उसमें भी मुंबई और मेट्रो रीजन में, उसमें से 30-40 तो मुंबई में ही है, मुंबई मेट्रो रीजन में. पुणे में I'll say around 10-15. So and remaining in the rest of the Maharashtra. So a lot of ample of scope is there. Gujarat 42, Telangana 27, Karnataka only 21, Andhra 21, Madhya Pradesh only 14, Tamil Nadu 12, Rajasthan 8, Chhattisgarh 5, Punjab 7, Daman 1, NCR 2. We remain focused on our strategy of offering our customers good quality products at great value based on the everyday low cost, everyday low price. ये इनका मॉडल है, everyday low cost, everyday low price. Our store offerings provide our customers with a distinctive shopping experience comprising of wide range of everyday value retail products sold in the modern ambience and with the feel of a large retail mall type of feel लाने की कोशिश करते. Okay, that is okay. Key performance indicators, number of stores, as you can see over the years how it expanded. 131 2017 में जब IPO आया था, और it's like 234, almost it could have been doubled, but pandemic की वजह से वो थोड़ा हो गया, ठीक है. Our operations are ably supported by a network of distribution centers and packing centers. As of March 31st, 2021, we had 39 distribution centers and 7 packing centers. Important data, important observation. So backend infrastructure भी है. आगे interesting part. Now comes the interesting part, the e-commerce side of the company. Here is the picture in front of you. Avenue E-Commerce Limited, AEL. AEL, a subsidiary company incorporated on 11th November 2014, is engaged in the business of online grocery retail under the brand name Dmart Ready. AEL allows its customer to order a broad range of grocery and household products through its mobile app and through the website www.dmart.in. Customers can either self-pick up their online orders from any designated Dmart Ready pickup points or get them delivered at their doorstep. AEL has been operating its business in Mumbai through its fulfillment centers and network of pickup points located across Mumbai metro region. During the financial year 2021, AEL expanded its coverage by opening additional fulfillment centers and pickup points in Mumbai metro region and in 4 new cities: Pune, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad. Last में financial performance, the e-commerce branch of Avenue Supermarkets
AEL's revenue from operations in FY21 stood at 791 crores as compared to 354 crores in FY20. मतलब FY20 में when there was no pandemic and FY21 being a pandemic year, there is more than 100% growth in revenue. तो यही मैं एक पॉइंट आपको फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, 100% ग्रोथ इन रेवेन्यू. ई कॉमर्स branch, e-commerce subsidiary of Dmart. Numbers are in front of you. The company registered loss of 80 crore in FY21 as against loss of 70. तो loss same है, ठीक है, ठीक है. In pandemic year, see, if you look at the e-commerce companies in India, mostly these companies are loss making or having a very thin profit margin. So it's okay. This loss is not a worry. और एक interesting observation मुझे I noticed one more important bit of information. Here is a picture in front of you. Reflect Wholesale and Retail Private Limited. A wholly owned subsidiary company was incorporated on 28 May 2018 to carry on business of wholesale and retail of goods and products. It is yet to commence its operations. तो ये एक wholesale market को भी target करने का कंपनी का प्लान है. I took this bit from the annual report. So मतलब फ्यूचरिस्टिक जो आउटलुक है वो कंपनी का कहीं ना कहीं यहाँ मालूम पड़ता है. एक छोटा सा बिट वेबसाइट से, इट्स नॉट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट, बट आई थॉट आई शुड टेक दिस फॉर डिस्कशन. दिस इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. The supermarket chain of Dmart stores is owned and operated by Avenue Supermarkets Limited. The company has its own headquarters in Mumbai. The brands Dmart, Dmart Minimax, Dmart Premia, D Homes, Dutch Harbor, etc. are brands owned by Avenue Supermarket Limited. So मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कंपनी ने थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है and they have launched their own set of private labels. D Homes is famous. उसके अंदर काफ़ी उन्होंने products launch किए. I could not get much pictures on the Google, so I am not able to show you here. बाद में प्रीमिया जो ये ग्रोसरी में है, इनका फूड ग्रेन्स ग्रोसरी और रिलेटेड वो सेगमेंट में है, वहाँ पे भी इनका है. वो ब्रांड से एक यू गेट अटैच टू अ ब्रांड आफ्टर ऑल. सो वो एक ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है. ऐसा नहीं है कि लूज प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट डीमार्ट के अंदर. देयर आर लूज प्रोडक्ट्स अवेलेबल, वेदर इट्स शुगर और अदर फूड ग्रेन्स, बट they have also launched their private label D Homes Premia. और D Homes का कैटेगरी अफोर्डेबल है and that's why it is famous in the eyes of customers. और भी इनके ब्रांड से तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं कंपनी ने किया है. थर्ड पार्टी से ही ये मैन्युफैक्चर करके लेते हैं. जैसे कि हम लोग ने इनिशियली वीडियो में देखा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. वो क्लस्टर में अप्रोच होते हैं, दे सेंस द डिमांड, दे सेंस द बिहेवियर, and accordingly they launch products. Okay, this was just a brief idea about the Dmart's functioning. आने वाले वीडियो में मैं और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा. इसके पहले का एक वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, रिलेटिव्स एंड लाइक माइंडेड पीपल. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट्स. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज @the break even point. थैंक यू.